investment criteria. Right. Now investment criteria की जहां तक हम बात करें, see, if we talk about what we will go through, what we'll study, what we have already done, we'll understand the net present value concept. That is the present value. We'll understand something called IRR. We have already did the internal rate of return, right? Theoretically, we did these things, internal rate of return. Then something that we would love to do it is the payback period. जो आप कर चुके हो methods, and another one we like to do is profitability index. ठीक है, इन 4 तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे with the help of certain exercise. The whole point is, अगर if I ask you, जहां तक हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की हम बात करते हैं, you know, so now net present value की हम बात करते हैं, this is primarily one of the decisions that we take in the, अगर मैं मान के चलो, if I ask you broadly, आपके सब में से अगर पूछूं, अगर if you talk about financial management, right, few terms I wish to know you guys have heard of these terms or not, because that is what we do in your work in net present value, something we call WACC or hurdle rate or required rate, or you can say cost of capital. ये सारे जो टर्म्स है, ये क्या टर्म्स है? WACC का सुना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Heard of this term in finance at any point of time? हेलो, सुना होगा ना? Weighted average cost of capital. Basically this is, hello, सर वेटेड एवरेज सुना है, अकाउंट्स में, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग में सुना है सर. WACC के बारे में नहीं सुना. WACC basically it takes an weightage, depends on the factor. WACC basically it's the weightage that it takes out of your equity and दूसरा हाँ क्या सर, होता सुना है. इक्विटी एंड डेब्ट का a percentage with the है equity याद and the नहीं debt सर. they take. So that is, ये क्या होता है? ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट इज बेसिकली जो पैसा आप बैंक से मार्केट से उठाते हो, जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगाओगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. ना ब्रॉडली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज, मैं हडल रेट का जानने का, आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस हडल रेट. कभी सुना आप लोगों ने? सारे थिंग्स एक ही, आइदर इट विल बी हडल रेट, अदर इट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट विल बी WACC, एवरीथिंग. ये हडल रेट एक टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो यूज होता है, व्हाट इज दिस? ओके, ब्रॉडली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्रॉडली it has got two sides. Hello, Yes, sir. it has got two sides. One we call the financing side, and second we call और कुछ नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आप लोगों को बता. Financing side. Yes. पैसा कहाँ से उठाना है, दैट इज द फाइनेंशियल साइड. और इन्वेस्ट कहाँ करना है? पैसा कहाँ लगाना है ताकि प्रॉफिट कमाऊं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट साइड. दैट इज इट. Whenever you go for the financing side, there will be a cost of the capital, correct? जब पैसे उठाओगे उसका कुछ रिटर्न तो करोगे ना उनको, इंटरेस्ट दोगे, whatever those. So when a financing side will always have a cost of capital, and investment side looks for ROI. ROI is what?
Return on investment. फैंटास्टिक। तो ये जो आरओआई का काम हमेशा क्या होता है, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, इसको बीट करना होता है आपके आरओआई का। देन ओनली यू आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट्स। कि दूसरे टू सेपरेट साइड्स इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज का बात करो, दोनों का कैश फ्लोज अलग होंगे। इन्वेस्टमेंट साइड का कैश फ्लोज अलग होता है, फाइनेंसिंग साइड का कैश फ्लोज अलग होता है। तो बेसिकली यू नीड टू बीट दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल to in the ROI, then only. So that is called the hurdle rate. So whatever cost of capital that becomes your hurdle rate, your return on investment should beat this particular rate so that the organization can make profit. Okay? Okay, now. सर एक बार फिर से hurdle rate. हाँ जी, हेलो सर हडल रेट एक बार फिर से. भाई, सर हडल रेट एक बार जो repeat कीजिए भी ना. पैसा आपने उठाया उस पैसे का कुछ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ना। तो अच्छा. मान के चलो, अगर इफ आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% आ रहा है, लेट अस अज्यूम योर आरओआई शुड बी Yes sir. एट लीस्ट 15% ना। एग्रीड और नॉट? Yes sir. Yes sir. आरओआई शुड बी एट लीस्ट 15%। so that 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकम्स योर हर्डल रेट। उसको आपको बीट करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। Right. So either you call it a hurdle rate, or you call it a return on investment, or you call it the cost of the capital. Net present value में हमेशा एक discounting factor होता है, and that discounting factor decides the worth of the money as I progress towards the timeline or I come backwards to the time. Right? So net present value, as we have discussed in the last class, is nothing but the worth of the money today will not be the same as the worth of the money 1 year down the line, 2 year down the line, 3 year down the line. और ये डिसाइड जो होता है वर्थ ऑफ द मनी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, वी कॉल दिस एनी ऑन दिस मे बी माय डिस्काउंटिंग फैक्टर। ओके, और एक चीज जो हम लोग इसमें जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग, you we are discussing it out of the what is the cash flow. I am not definitely not discussing the principle of cash flows. I am not discussing the incremental cash flow separation principle. कैश फ्लो का क्या होता है? एक होता है the term that we always use is Annuity method. annuity, right? ये annuity क्या है? What is this annuity? अगर सिंपल देसी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें, what is this annuity? Annuity method. A periodic payment. Either I am receiving or I am paying, but which is periodic. That's an annuity, right? Yes sir. लम सम में जिसको मैं नहीं दे रहा हूं। अब आपका एन्युटी होता है ना, कुछ एन्युटी जो होते हैं आपके, सम एन्युटीज आर योर व्हाट वी कॉल द कांस्टेंट, और हम कहते हैं इवन या कांस्टेंट एन्युटीज होते हैं, राइट? दैट इज सिंपल टू डू। कांस्टेंट मतलब फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पे आप पे करते रहो, या फिक्स अमाउंट आपके पास आता रहेगा। 500 rupees per month will come to you, 600 rupees per month will give you. तो इवन अब कांस्टेंट जो होता है ना, देन एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू, तब आपको एनपीवी फंक्शन की भी जरूरत नहीं है। इफ योर एन्युटी इज कांस्टेंट, राइट, if your annuity is constant, then simply PV function suffice मतलब काफी है। सर पीवी मींस प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन। 5 फंक्शन हमने नहीं करी है। अच्छा, ओके। यस सर। if it's uneven, that is not constant. अगर एन्युटी uneven है, that means पैसा जो मुझे मिल रहा है और जा रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, then only I go for yes, right what we call, then I will have to apply the NPV function. Otherwise PV function is good. मतलब PV से भी कर सकता हूँ, then only NPV function will work. अब मेरे जो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो, कुछ कैश फ्लो होता है हम कहते हैं पीरियोडिक कैश फ्लो। तो पीरियोडिक कैश फ्लो means at the same time, at the end of the period or at the starting of the period, the cash flow is coming. So that's a periodic, but sometime we have
non-periodic cash flow, then it becomes complicated. NPV function will not work. Non-periodic मतलब जो फिक्स ही नहीं है, 31 तारीख को नहीं आ रहा है. Sometimes the payment is coming in the 14th of this month, sometimes payment coming in the 21st of the month, there may be the 2 months gap, then the payment is coming again, then in 1 month 3 times it is coming again. So it's a business, it can happen. So your cash flow can be periodic, systematic, or your cash flow can be non-periodic, right? So depending upon how this works, you'll have to choose certain function. आज का discussion हमारा यही है, to understand this, right? And sometimes you will have non-conventional cash flows, right? Now non-conventional कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कन्वेंशनल कैश फ्लो हम क्या समझते हैं भाई, माइनस CF0, देन यू हैव CF1, देन यू मतलब कैश फ्लो ईयर में इन आया, फिर CF2, फिर CF3, लाइक दैट इट गोस, देन you know CF4, like that it is coming, right? But many times what happens, CF1, CF2, it is periodic. it is periodic, in this case it is periodic. अगर डेट मेंशन नहीं होगा तो we'll assume it's periodic. लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल का इशू क्या है मैं बता रहा हूं, मे बी दिस इज माइनस अगेन. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो फर्स्ट वन सर नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो ये क्या होता है सर? नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो का हम ये समझते हैं कि जो 0th ईयर में जो कैश है वही सिर्फ बाहर जा रहा है, बाकी सारे केस जो आ रहा है दैट इज इनफ्लो. नॉन कन्वेंशनल में पीरियडिकली मनी विल गो आउट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So you have a Yes, sir. negative, then positive, then negative, then positive. इस टाइप का अगर कैश फ्लो होता है उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो. नॉर्मली कन्वेंशनल कैश फ्लो negative, then all positive, that we assume. So depending on that, you see, तो this is net present value. One thing that will analyze this, जिसका net present value ज्यादा होता है, and then IRR जो चीज है, IRR primarily they say they use it for reinvestment purposes. अब कभी कभी एक एनपीवी के लिए दो IRR हो सकते हैं. तो एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स. ओके, ओके सर. ये जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स हमारे पास थे उसके बुनियाद पे अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं. नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ कांस्टेंट एन्युइटी. ये मुझे देख के समझने आना पड़ेगा. Assume you want to purchase an annuity that will pay 600 a month for the next 20 years at an annual interest rate of 6%. How much does the annuity cost? That means you have to calculate the present value. इसके लिए आपको ना कैश फ्लो कराने की जरूरत है कुछ, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट एन्युइटी. तो कांस्टेंट एन्युइटी है तो हमें पीवी फंक्शन पे जाना है. वी नो देयर आर द 5 कंपोनेंट्स दैट आई विल आइडेंटिफाई. पीबी, एफपी, रेट, एनपीईआर, एनपीईआर, पीएमटी. सबसे पहले तो हमें ये लिखना होता है. In this case, your present value you'll have to identify. Future value should be 0 क्योंकि it's a monthly payment सबके पास आ रहा है. Rate is 6%. यहाँ आपको एनपीवी फंक्शन की जरूरत नहीं है. 6%, right? NPR is 20. Okay. PMT is 600. It is coming to you, so it's positive. Quit out. Anyone? Out of this? Right? So what you will have to do is you simply use the PV function. In the PV function, first it is asking the rate compounded annually, तो मुझे कोई issue नहीं है. Then it is asking for NPR, that is 20.
then it is asking for PMT, that is the, इसके बाद देखो फ्यूचर वैल्यू मुझे देने की जरूरत नहीं है, टाइप भी मुझे देने की जरूरत नहीं है, आई कैन क्लोज इट हियर, इट गिव्स मी दिस, राइट। तो 6,881 रुपया अगर मैं इन्वेस्ट इसमें करता हूं, then I will be at a no profit, no loss. So anything less than that, if I pay for this particular thing, I will have an positive NPV. So this 600 रुपया महीने पे जो मुझे मिल रहा है, राइट, which is incoming, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा इतना पे कर सकते हैं at the beginning. Anyone having any doubt can ask me. ये 600 रुपया जो 20 साल से आपको मिलता गया ना, सबका इकट्ठा करके सबका प्रेजेंट वैल्यू जो है that is 6,880. तो ऑब्वियसली, हेलो, Yes, sir. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. All right. So let us come to, so my point was why I took it. So if you have a constant annuity, do hell with your, what do we call the NPV function and etc. Simple PV function will suffice. Okay. Now let us come to the next proof. See, in this case, what I am having is 20,000 per day, 35,000, 20,000. Obviously, this particular thing here, you'll have to have NPV function. Now, let us make ourselves very clear about that. And this is the initial cash flow. They wrote it differently here. ठीक है, जैसे लिखेगा वैसे मुझे करना है. Basically, if you, and आप सबके इस इक्वेशन का पढ़ा होगा, मैं इक्वेशन को आपके सामने खोलना चाहता हूं ताकि इक्वेशन के साथ मैं अपने एक्सेल को रिलेट कराना चाहता हूं. आपका इक्वेशन, all of you see this equation, right? So basically in the circle, that is this particular thing that I right now I am having, it basically what it does, it calculates the present value of all the inflow, right? All the inflow here, but I am not doing it in this case. What I am doing here, if you come down to the bottom one in Excel, we calculate from year 1 to year end all the inflows minus the first year's outflow. That is the equation, guys. Okay, so the equation that I'm talking about, that we have done in accountancy or whatever in corporate finance and etc. This part, it is the inflow of the, it is the present value of the all inflows, and this is basically I'm talking about the outflow of the initial year that should be subtracted from it. Then I get the net present value. That's how it is calculated mathematically. All right. Okay. That's how mathematically we calculate it. So let me come here. These are the all inflows I have. So my NPV function actually, NPV function by itself gives me the present value of all inflows, which are uneven definitely. So this becomes your rate of interest, and this is the cash flow that you are having. So once you have it, it gives you the present value of all your inflows. That means it is giving you this particular result. So once you use the NPV function, always will have to remember one thing. Whenever I'm using the NPV function, it is only giving me this, right? So to calculate, I'm using the NPV function, fine, but it is giving me the present value of the cash flows in NPV function. So to get the NPV actually, we'll have to subtract the initial flow from that amount, right? So here, this, I'll have to subtract the initial investment that I'm having. So you're getting your NPV is 29,806. NPV is positive, that means it's a good investment. Then you are making a profit, correct? Guys, Understandable, sir. understandable, na?
No issues. Yes. Fine. Now, so let's see. Now we'll go for some sort of what we call the profiling. अब एक चीज हम लोग देखते हैं इसमें जो we'll try to do is in the next question when we come, that is this one, right? Next question. Now see, this will be interesting for us. Okay, so data is given. आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा एक्चुअली आई थिंक आई हैव शेयर्ड विद दिस. अगर मान के चलो डेटा आपको ऐसा दिया होता, everybody look at the data very carefully. Data can be given in any form. आपको eventually इसको कैश फ्लो में लाना पड़ेगा, right? तो suppose if this is the data that is given, alright, यहाँ पे भी ये क्या होगा, alright, okay. Basically here they are giving, because time zero there is an outflow. Then this per year they must have invested again in the first year, then again they invested this, they again invested this. तो मुझे इतना हेडेक की जरूरत नहीं है. These are all in cash, so I can actually calculate the inflow. Correct or not? So your inflow minus that year's outflow, you should deduct that year's outflow. आपको total cash flow उस साल का मिल गया, right? This is the cash flow of each year. I think there is no issue in this. Sir, repeat it. See, एक चीज जो आपको डेटा को देख के समझना पड़ेगा, नेगेटिव साइन मींस व्हाट? मनी इज गोइंग आउट, राइट? मतलब ये आउटफ्लो. हाँ, तो 0 ईयर में जो लगाया दैट इज इन्वेस्टमेंट. इसके बाद क्या होता है ना, काम पे फर्स्ट ईयर में भी आपने लगाया होगा, सेकंड ईयर में भी आपने लगाया होगा, थर्ड ईयर में भी लगाया होगा, फोर्थ ईयर में भी लगाया होगा, फिफ्थ ईयर में भी लगाया होगा. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो सेकंड Yes, ईयर, sir. बट इन द साइमल्टेनियसली सेकंड ईयर से आपका इनफ्लो भी हुआ है. Yes, sir. तो टोटल जो नेट कैश फ्लो आपका है दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट. तो टाइम वन का नेट कैश फ्लो 80,000 आपके पास आया है, 28,000 गया है, तो नेट कैश फ्लो जो इन है वो कितना हुआ है? 52,000. कट माय पॉइंट? Sir. Yes, sir. 60,000 आया है, 80. 16,000 गया है, 43,000. अब दिस इज 20% इज योर. Sir, 80,000 minus 28,000. हाँ, 80,000 माइनस 20, उस साल का करना है ना आपको. यू हैव टू गो फॉर दैट ईयर ना. Yes, sir. यू हैव टू गो फॉर दैट ईयर ना. Yes, sir. Yes. ओके, Hmm. ऑलराइट. नाउ इट इज अंडरस्टूड. Yes, sir. Anybody having any doubt with this particular calculation of the cash flows? Huh? No, sir. No, sir. Then No no doubt, doubt. sir. No doubt ना. No doubt, sir. ऑलराइट, Okay, sir. चलो. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये 20% है, हम यहाँ सीधा सीधा एनपीवी कैलकुलेट इक्वल टू एनपीवी. एक साथ करेंगे सारी चीजें. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, दैट इज D11. D11 is your rate of interest. This is your inflow plus your outflow. You press enter. कितना आया? Minus That means यहाँ आंसर क्या होगा? 738.1. आंसर क्या होगा? Will you accept or reject it? Sir, rejected, sir. Will Rejected, sir. will reject it. Okay. इसके बाद they do something, you know, the second part को हम भूल जाते हैं. Second part को let us forget the second part. Second part will come later. They do a एक चीज जो presentations में we do a NPV profile. Okay. So NPV profiling means मैं यहाँ पे insert करके और एक space इस पे लाऊंगा. You know why I'll bring this space. I hope you understand why you bring the space. See now, मुझे क्या करना है, मुझे अब एनपीवी ना डिफरेंट फॉर्मेट्स के निकालना है. 5% पे एनपीवी कितना होगा, 6% पे एनपीवी कितना होगा, 7% पे एनपीवी कितना होगा, अप टू 36%. तो हाउ विल यू डू इट? आई ब्रिंग इन द इक्वेशन of NPV here.
राइट। इसका कलर में चेंज कर देता हूँ, ब्लैक। ये मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट आई एम डूइंग हियर? एनीवन कैन टेल मी व्हाट आई एम डूइंग? 36%. नहीं, व्हाट आई एम डूइंग हियर? Sir, 30. What method I'm using? I'm using the data table, right? Yes, sir. Yes, sir. Good. आप डेटा टेबल यूज किए बगैर भी इसको कर सकते हैं. So it is giving you the variations. You see, it has given you the variations. 29.576, 27.070. तो 5% पे इतना एनपीवी है, 8% पे इतना एनपीवी है, 10% पे इतना एनपीवी है, 12% पे इतना एनपीवी है, 20% पे जाके निगेटिव हो गया, then it goes negative. Normally how we show it, you see, I go to NPV profiling की अगर हम बात करते हैं, I go to insert, graphically you show it, it looks good. So we choose the area chart, right? Once we choose the area chart, I right click. आप अगर यहाँ डेटा टेबल यूज नहीं करते, आप एनपीवी फंक्शन जो वहां लिखा था मैंने, वहां लिख के फिर उसको भी ड्रैग डाउन कर सकते थे, योर चॉइस, राइट? Select data. Yes. Okay, sir. Select data, but it looks good always when I know, right? I choose this. Okay, so this is the profiling that I'm doing here. I click on OK. I click on edit here. I click here. Okay. See, you see this chart? Yes, sir. This chart basically showing, you see, from this person, from 5% to this person, your NPV is positive. After that, your NPV goes negative. Now, second one, why I have taken it, just let me see if I can do it. I type if this value is greater than 0, that is positive. आप इसको मत लिखिए. Greater than, if it is greater than 0, चलिए less than 0 करता हूँ. If this is less than 0, I'll explain it to you guys later. If it is less than 0, then I put this. I'm doing some manipulation for different thing. ये calculation के साथ कुछ लेना देना नहीं, right? When I click it, I press enter. If it The greater than ले लिया. less than 0 आएगा, right? Less than 0 लिया, then I bring it down. तो जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है यहाँ पे रिपीट हो गए. ओके, नाउ यू सी, आई राइट क्लिक हियर, सिलेक्ट डेटा, ऐड, आई क्लिक इट, यहां से लेके, ओके ओके, यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड? किसी को समझ में आया? ये दूसरा वाला को कोई मतलब नहीं आपका कैलकुलेशन, बट स्टिल व्हाई आई बॉट इट? Because negative I had to change the Yes, color. sir. Negative NP. Negative I had to change the color, but in the same chart I cannot change the color, right? So I made another chart where I only took only the negative values. Got my point? I made another Yes, sir. chart. I took on the negative values, लेकिन उस chart को मैंने infographics का ही part है, वहां से choose किया. But the point is that, so here what I wrote, here I wrote an equation. If this particular value is less than 0, then only bring it here, otherwise don't bring it. So it gives me a beautiful picture. And you see, अगर यहाँ ये आपको यहाँ disturb कर रहा है, you right click, go to format access. ठीक है, यहाँ जाके नीचे levels आपको मिलेगा, go to the levels. Right, levels में जाके next to axis, bring it low. आप इसको low पे लेके आ सकते हैं. So in presentation, this looks wonderful. Actually, this particular point is your IRR. We'll come to this. ये जो point है ना, यही आपका IRR. तो यहाँ तक समझ में आया सबको? This is we call NPV profiling. NPV लाने के बाद we can do a what if analysis of the NPV, and we can graphically represent it, and if needed, we can use two colors to make it. Clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay. अब भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा मेरा, you know.
यहाँ तक तो NPV in the last class also we did, we are repeating it. Now here I have a problem. Please look at my problem. The problem is, this is the amount that I'm investing in the 1st January 2009. The first payment I'm getting in 25th May 2000, 2009, second payment in September, third payment in January 2000. So this is a non-periodic cash flow. Are you getting my point? Yes, sir. Luckily, if it's a Yes, sir. Yes, sir. so luckily if it's a non-periodic cash flow, actually Excel can handle it. I tell you, Excel can handle it. How Excel can handle it? Excel do not use, then if it's a non-periodic cash flow, we do not use the NPV function. Rather, we use a new function. I'm introduced version XNPV, extended NPV function, right? Only for the non-periodic stride, I take the rate of interest. First, it's asked for the values. Here I choose the whole value, even including the initial outflow. यहाँ किसी चीज को छोड़ते नहीं है. I choose the whole value. Then I choose the whole dates. Are you getting my point? And what you get is your net present value, that is 10,805. It's a positive value that you are getting. You got my point? So if it is a non-regular cash flow, you will not use the traditional NPV function. Rather, you will use the XNPV function. You got it? Guys? Yes, sir. ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया है, आप इसमें जाए जरा. अब इसमें मुझे आपसे दो चीज आप लोगों से मुझे चाहिए. ठीक है. And remember this, after the class you have half an hour window to return it in the inbox, this particular 25/3, completing it. तो हम लोग साथ साथ तो करते जा ही रहे हैं. You will do it, and Excel sheet you need to upload it in 25/2 in inbox. Okay. अब इसमें आपको NPV निकालने में see, first if somebody has given you a data, यहाँ तो मैं कलर कोडिंग वोडिंग करके दिया हूं तो आपको पता चलेगा. If somebody has given you a data and they've given you a date and they're asking you to identify the cash flow, first look at it, it's a periodic one or not. It looks very periodic, 11, 12, 2010, 11, 2011, 12, 13, 14, 15 missing hai. You see 14 and 15 missing hai, 21, 22 missing. So that means it is also a non-periodic cash flow. So we'll have to use a XNPV function. No doubts about this. Clear? Yes, sir. All right. Sir, but rate. अब मैं आपसे जो चाहता हूँ, आप पीवी फंक्शन यूज करके यहाँ हर एक का कैश फ्लो कैसे लिखें. Because you are going to make a mistake here. Sir, rate नहीं दिए. हाँ? Rate. हाँ. Sir, rate. चलो चलो चलो. Write down it's 9%. It doesn't matter. 9%. Let us assume. अब हम कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सएन पे भी तो एवरीबॉडी विल बी एबल टू डू, राइट? एनपीवी अगर कैलकुलेट करना है मुझे, एनपीवी अगर कैलकुलेट करना है, नाउ एवरीबॉडी कैन डू. सिंपली यू पुट एक्स एंड पीवी. They made it simpler. In 2007, I don't know it is there or not. 2007 लेके कोई बैठा है? So you choose all the values, you choose all the dates. Remember, date should be in the date format. अगर date format नहीं होगा, ये आपका आ गया net present value 14,127, right?
Now if we calculate the present value calculate करने का मेरा जो equation है that is present value, right? Rate, comma, and P here is this, Period. PMT is nothing, future value is this, you close it. So you get the same value, right? You make it a minus, so you get a positive minus value. It looks good. Okay. And here you Okay. fix what? You fix this one, FO, rate of interest. Now if you drag it down, you're getting the future value of all the. तो मैं traditional NPV calculate करके देखता हूँ. Basically, these are all your inflows plus your outflow. कितना है? There is a difference, right? Yeah, so traditional ways you are calculating NPV, it is coming 14,136.87. But when you are using Accent, it is coming 14,127. So there is a difference of 3 plus 6, 9. Why this has happened, you know? Because, see, I tell you, here we have used the 5th, 6th period, but this is actually the 7th period. Sir, one question, sir. Haji. सर एक्स एनपीवी और एनपीवी का दोनों का डिफरेंट क्या है सर? एक्स एनपीवी और सिर्फ एनपीवी का दोनों का डिफरेंट क्या है? प्रदीप साहू. यस सर. NPV works on periodic cash flow. Right? NPV किस पे काम करेगा? Periodic cash flows. That means the cash flow is happening either at the beginning of the period or at the end of the period, and it is periodic. But when it's a non-periodic cash flow, NPV may commit a mistake. वही मिस्टेक में दिखा रहा हूं. अगर इसको मैं एनपीवी यूज करता हूं, ये पीरियडिक क्यों नहीं है? दिस इज नॉट पीरियडिक, आई टेल यू, बिकॉज देयर इज अ गैप. 14 के बाद 16 आया, 15 नहीं है, तो इट इज नॉट कंप्लीटली पीरियडिक. तो मैं अगर सीधा सीधा एनपीवी लेता हूं, एनपीवी विल नॉट टेक इट एज लाइक दिस, राइट? एनपीवी लेता हूं, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूं, मैं सारा ये चीज लेता हूं, राइट? Then I plus the initial outflow लेता हूँ. Let me see how it comes. It is coming 15,608 something. Are you getting a point? Yes sir. Right? क्योंकि इसने कुछ गड़बड़ किया हुआ है. ठीक है? अब here basically whatever, this is period number 1, this is period number 2, this is period number 3, this is period number 4, this is not this is period number 6, this is period number 7, this is period number 8, this is period number 9, this is period number 10, this is period number 12. तो यहां तो हमने सीक्वेंस में लिख दिया 4 5 6 8 9 12, राइट? लेकिन अगर सीक्वेंस में मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, everything will change. You are getting my point? Yes sir. Because this is not the 5th period, this is 6th period. लेकिन अगर PV function NPV लगाऊंगा, NPV will take it as the 5th period and they will make a mistake. So whenever there is a unconventional cash flow, we'll have to use the X NPV function. Am I clear? Yes sir. Yes sir. जैसे you come to the next one, Yes, it is more complicated. ये next one पे आओ, it is more complicated because ये तो different months पे है, ये different years पे है, और ये एक ही महीने में 3 बार है. And this is the total cash flow you have.
Are you getting my point? It is from 2007 to 2013, 2010 to 11 you got it 5 times, 12, then 13, then 13 within a month you got this amount. So it's absolutely non-periodic cash flow. So whenever you have a non-periodic cash flow, you are not going to use the NPV function. You are going to use the X NPV function. Clear? सब लोग क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. All right. Yes, sir. Yes, sir. All right. Now let us come to the next one. That is what we call is my IRR, internal rate of return. अब internal rate of return का there is a two school of thoughts. एक school of thought ये कहता है basically हम ये देखते हैं कि internal of return वो rate of interest है जिसमें आपका NPV zero हो जाता है. That means ये जो cash flow मेरा है, it's a pretty conventional cash flow, right? तो यहाँ पे हम अगर IRR कैलकुलेट करते हैं देन ये कहता है कि दिस इज 0.16. आई कन्वर्ट इट टू अ फॉर्मेट सेल, आई कन्वर्ट इट टू अ परसेंटेज. इट इज सेइंग कि 16.13% पे आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट बिकम्स जीरो. सो एनीथिंग लेसर देन दिस इज गुड. तो रीइन्वेस्ट करने के लिए अगर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इससे कुछ कम होता है दैट इज गुड, बिकॉज देन नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव. ठीक है, इस रेट से नीचे जो भी रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट होगा उसमें आपका एनपीवी पॉजिटिव होगा. कैसे? लेट अस एज्यूम, नाउ लेट अस एज्यूम दिस इज योर रिक्वायर्ड रेट, दिस इज योर रिक्वायर्ड रेट, दिस इज योर इनफ्लो, दिस इज योर आउटफ्लो. इसके बेसिस पे एनपीवी कितना होगा? ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द एनपीवी. एनपीवी, this is your rate of interest, these are your inflows, these are your inflows, okay, and plus with your outflow. एनपीवी जीरो हो गया. तो जिस रेट ऑफ रिटर्न पे आपका एनपीवी जीरो होता है उसे हम कहते हैं द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? उसके नीचे कोई भी अमाउंट इज गुड फॉर अस. क्यों? देखो, अब इसको अगर मैं 18% करता हूं, your net present value has become negative. That means you are making loss now in present consideration. If it is 14, you see it has become positive. So anything less than 16.13 is good. Even SIF 16 will be good. SIF 16 will be positive for me, right? 616 will be positive, right? 15 will be positive. So that becomes the benchmark. That is one thought of calculating IRR. अब IRR के साथ भी problems है. Is IRR clear to everybody? The rate of return which makes your NPV zero is your what we call the internal rate of return. So anything less than that, if the interest, your NPV becomes positive. Okay? So they mainly use it for reinvestment purposes. तो जो पैसा 63,120 आ गया इसको दोबारा लगाना है, 60,000 नीचे को लगा दो. Okay? But we also have just IRR 1 पे हम चले आते हैं. ठीक है? Now let us come to this. Okay? Required rate of return is 0.12. This will be interesting. ठीक है, इसको सेम हम एनपीवी हम लोग करते हैं इसको जो पहले किए थे. लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से हम समझ क्या रहे हैं, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से हम समझ क्या रहे हैं. तो लेट अस कैलकुलेट द एनपीवी हियर. कैन आई कैलकुलेट द एलपीवी हियर? मैं एनपीवी को यहाँ चलो मैं एनपीवी यहाँ कैलकुलेट करता हूँ. लेट मी कैलकुलेट द एनपीवी हियर. NPV को मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ. जस्ट सी, I have to calculate the IRR. IRR I can do by simply this, equal to IRR. मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं. I select everything, it will give me the IRR. So it is given 16.493 and नीचे if the required return is less than or equal to NPV is 0. तो 16.493 में आपका NPV 0 होगा. तो हम प्रेजेंट कंडीशन पे एनपीवी कितना है वो देख लेते हैं. प्रेजेंट कंडीशन पे अगर एनपीवी होता है, दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज योर इनफ्लो,
and this is your outflow. Present पे आपका NPV, I think it has come positive. आपका NPV जो है 13,435 समथिंग है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, NPV को यहाँ पे लाता हूँ। आपका जो NPV है, I bring it, then I do what I do best, I do a data table, ठीक है। You keep doing these things, then you don't forget this thing. I come to the data table, data table से मैं rate of interest इसको लेता हूँ, I click OK, I get all the datas, I come to insert, I choose a line chart, select data, right? Add, you choose this data, okay, you choose edit, okay, right? अब देखिए आप इसको, जीरो कहां पे हुआ ये? 16 point something पे अगर आप फाइंड आउट करो, योर एनपीवी इज गेटिंग जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका एनपीवी जो जीरो कहां हो रहा है? जहां ये जीरो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, दैट इज योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो एनीथिंग मोर if the cost, then you are making losses. Anything less is the cost now is you are making profit. So IRR decides that. Either you can go for NPV method, positive NPV, or IRR method. आया समझ में? अब IRR के साथ भी एक प्रॉब्लम है। Guys, clear till now? Hello? Yes, sir. Clear, sir. I have everybody with me ना? ऐसा तो नहीं कि याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright. Yes, sir. कहाँ है सब? Okay, fine. अच्छा, let me just check it. संजीव बता रहा है वॉइस नहीं है। अच्छा, नेटवर्क इशू, सब अनवर का नेटवर्क इशू है। ऑलराइट, फाइन। सो guys, now let us come to the next problem that your IRR will face. See, अब आपको मैं एक नया चीज दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट इट। IRR में एक चीज, see here it's a non-conventional cash flow. Why it is a non-conventional cash flow? या negative values भी आ रहे हैं। So let us see what is the IRR. I choose it. Your IRR is, it's not 10% actually, it's something that 10%. अब एक चीज दिखाता हूँ. Somebody asked me, if you look at the IRR, you know, if you put a comma, it's ask for a guess. IRR is always a guesswork. So I got 10.7%. I am checking, is there any way it can become 0.3 also? Right? I press enter. कितना हो गया? 42.66%. That means I first IRR is this, that is good. I come to multiple IRRs. Many a times, if it's a non-conventional cash flow, there is a chance that you will have multiple IRRs, right? So I choose here equal to IRR. Why this happens, I also explain you. IRR, then you choose it again. It is giving you initially, if you do not guess, it will give the first IRR. अब आप गैस करते हो। गैस का मतलब ये होता है कि यू पुट, क्योंकि 0.1 यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यू कैलकुलेट 0.2, right? It is giving it 10.11. No issues. 0.2 is fine. That means it is not changing the IRR. Now I come to 0.3. It has changed the IRR, right? Now again I can come to, I can calculate 0.9 to be absolutely sure. So only two IRRs I am having. I have checked it from
3 to 0.9. One IRR is 10.11, one IRR is 42.66. That means your net present value will become 0 at 10.11 also. Your net present value will become 0 at 42.66% also. Hello. So Yes, sir. you can have Yes, sir. multiple Yes, IRRs. sir. हाँ जी बोलिए. You can have multiple IRRs if you have non-conventional cash flow. ठीक है. जैसे क्यों? What exactly happens if it's a non-conventional cash flow? Let me calculate the NPV here. Okay. Let me calculate the NPV here. NPV is NPV. Right? I take the rate of interest. I take the inflows and I subtract it with the outflow. Okay. Then I press enter. It comes something 1796. अब मैं let me do a data analysis. ठीक है. I can give it from 1%. I can give it 2%. Okay. I can bring it down. तो ज़्यादा हो गया. Suppose I take it up to 56. Alright. So this is the data that I have taken. Here I bring in the NPV net present value here. I bring in the net present value here, and I actually bring in the data table. So calculate the NPVs, and I want to see why there are multiple IRRs for this. Okay, data table. I take this, and this is basically for this. So I calculate. I click OK. So basically, what I got all the NPVs. Okay. Now I come to insert line chart. I draw the line chart. Okay. Let me select the data. Add. Let me select. Sorry, first one I'll skip. Let me select the whole data. Okay. And let me edit. Let me choose the whole percentage. Okay. Select data. Add. Okay. Okay. So I have selected the data. Right. Then let me select the percentage also. Then we'll understand it in a better way. अब देखो हो क्या रहा है, ये एक पैराबोला बनाए. अब इस चार्ट को देख के आप लोग मुझे कह सकते हो कि IRR 0, why there are two IRRs or not? Because it's a non-conventional cash flow, you will have this kind of a chart, right? It's a parabola. So basically, from negative it is coming to positive at this point. So there will be NPV will be 0. Then as the percentage increases, NPV rises, then NPV goes down. And as the percentage increases, at some point in time, it is crossing the axis again. तो जब भी मेरे पास नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होंगे, I will have to understand there is a chances that I will have multiple internal rate of return for that particular cash flow. Clear? Hello? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Clear. कोई डाउट नहीं है? Okay then. Okay then. Okay then. अभी आप लोग फिर मेरे लिए एक काम करो. ठीक है? You do this exercise 1 and you do this exercise 2
and you do exercise 3 चले exercise 2 exercise 1 and this complete this non conventional cash flow इसका सेम है इसका IRR फाइंड आउट करिए आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ 15% एनपीवी फाइंड आउट करिए एंड गो एट I want you to do the LCC this one do it right now ठीक है मैं आप लोगों को ऑपरेशंस का इसका दोनों का वीडियोस भेजूंगा डोंट यू वरी तो जिन लोग का नेटवर्क इशू है जो है they can later on check it okay पहले तो first thing that we'll do here we'll make the net cash oh 48% हो गई सर एनपीवी रॉन्ग आ रहा है नहीं मेरा भी गलत हो सकता है इट्स नॉट नेसेसरी राइट दैट मेरा सही आ रहा है एनपीवी दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट this is your inflow plus outflow ओके सर मैंने प्लस नहीं किया अच्छा अपने माइनस क्या होगा माइनस से प्लस होगा राइट सो आई कम टू डेटा
I come to what if analysis, data tables, I choose this percentage, and I get what I need, right? So this is, देखो दो जगह पे निगेटिव हो गया, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है. एक 14% पे हुआ तो मेरा यहाँ 14% मिला, देखो सी. और एक जगह कहाँ पे मिला 48% से, फिर ये निगेटिव हो गया. दैट मीन्स इफ यू ड्रॉ द चार्ट it will be a parabola, you know. If you draw the chart, it will be a parabola. Insert, ये देखिए, इसको क्या करा है तो 48% पे, और जितने भी परसेंट पे ये आएगा, क्योंकि इसको मैं परसेंटेज में डाल देता हूँ. सिलेक्ट डेटा, you add the percentages here. You got it. Okay, now remaining is this. आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इसमें discounted payback period, given the following 4 projects and their cash flow, calculated the discounted payback period with 5% discount rate, 10% discount rate, 20% discount rate. What do you notice about the payback period is the discount? No, actually forget about the payback period in this case. We're not doing payback, we have not done the payback period, right? So what I'm saying, इसमें जो आपको करना है, अगर आप 5% डिस्काउंट रेट लेते हो, अब अगर 10% डिस्काउंट रेट लेते हो, 20% डिस्काउंट रेट लेते हो, you'll have to tell me at 5% discount rate which project you're going to choose. 6, if it is 10% interest rate, which project you're going to choose and why? And if it is 15% interest rate, which project you're going to choose out of these 4, right? These are the 4 projects that you have. 1 2 3 4 5 6 years का cash flow डायरेक्ट कर दिया हुआ है इसमें. These are the initial investments that you made at the 0 year. So if the discounting rate is 5%, which of the following 4 we are going to choose? 10% which of the 4, 15% which of the 4. Right? This is one problem. Then again another problem. Same. Based on IRR, if we talk about which one is going to choose, and then if you can rate this one, this you can leave at this moment. We will do it in the next class also. If you can do it, you can go ahead and do it. Right? But what I need is after the class, within half an hour, you need to upload it. Now, first do this one. Project A, Project B, Project C, Project D. इसमें कुछ मैनिपुलेशन आपको करने होंगे. ये डेटा आपके सामने दिया हुआ है, आपको बताया गया अगर डिस्काउंट रेट 5% है तो which project is the most viable project. अगर 10% डिस्काउंट रेट मार्केट में है, which project is the most viable project, like that it goes.
Sir, 10302 right? A का. Basically, I do NPV. I take 5%. अब यहाँ पे एक देखिए बेटा ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, रिमेम्बर दैट. Here it is not negative at the top. तो ये नेगेटिव नहीं, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा मुझे. Yes sir, minus किया. ओके, ये सबको याद रखना है Sir, कि 1030. माइनस दिस. तो 8%. This is Yes sir, यही आ into रहा the project A, right? Then I fix it. I fix F4. I think I can drag it now. So if you look at 5% wind project you are selecting, B. Right? क्यों B? Because B has the maximum NPV, correct? Is it clear to all or not? Now if you look at NPV, if you Yes, sir. 10% NPV, if you look at 10% NPV, let us see 10% NPV again, let me calculate the same thing, equal to NPV. This is your 10%, comma, I choose everything, and in this case, because I subtract it from the initial investment, okay, F4, इसमें भी now if I choose IRR, we discuss IRR directly ऐसे choose करेंगे तो it will give you. I cannot, because for IRR the cash flow side needs to be changed. Are you getting my point now? तो अब मैं अगर directly IRR इसको यहाँ से choose करता हूँ, please understand in Excel always you'll have to manipulate. This absolutely wrong thing that I'll do, it will be now, because in IRR first one I'll have to make it first negative, then I can do. तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ IRR की जरूरत नहीं है, right? This one you do and this one you do. Okay, I will share the slides, revise it, everything we do. Next class, certain exercises. And we'll do the payback period and we'll do what we call the profitability index. इसमें जो doubts है आप लोग लेके आ नहीं रहे हो, बार मैं कह रहा हूँ, whatever doubts you bring it in the next class. Through these exercises and etc. bring it in the next class. Okay? अगर आप अपने doubts नहीं लाओगे तो how we can actually understand it? Okay? You'll have to, अगर कोई doubt आपके पास है तो